Yes. Let us continue with the uh, motion in plane. In motion in plane, we have already seen the concepts of displacement, velocity, and acceleration, and also we have seen some basic relationships between these, and also we have seen the concept of relative velocity, and also we have seen the some solve some questions or numericals based on all these concepts, right? Okay, so in today's lecture here we are going to see the projectile motion in detail, which we have started last time. तो लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसके बारे में हमको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है आज के लेक्चर में। ठीक है, सो चलो फिर अभी हम जाएंगे अभी बोर्ड पे। Okay, so we have seen last time that in projectile motion the different terms which we have to understand, जैसे अभी हमने देखा था कि okay, sorry for the interruption. Yes, okay. So basically, this is the maximum height of the projectile, and this is the maximum angle, or can say angle of projection here. It is denoted by theta here, and this u is called as the velocity of projection. Okay, velocity of projection. Yes, and also we have defined this time of flight. Capital T से उसको denote करते हैं time of flight, which is nothing but the time taken by the projectile to complete its trajectory. What do you mean by this trajectory? So the path along which this projectile moves is actually called as its trajectory.
रिमेम्बर। तो ये पूरा ट्रेजेक्टरी कंप्लीट करने के लिए जो टाइम प्रोजेक्टाइल को लगता है तो उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, एंड व्हाट इज द टाइम ऑफ ascent? It is the time required for the projectile to move from this um, point of projection to the highest point here is called as this time of ascent, and time of descent is nothing but the time required for the projectile to move from the highest point to the lowest point, or the point at the level of the point of projection is called as the time of descent. And also we have seen that this time of ascent and time of descent are going to be the same only. And also we have seen that this time of flight is actually the sum of this time of ascent and time of descent. But since both of them are same, the time of flight happens to be double of time of ascent or time of descent. And hence time of ascent or time of descent happens to be the half of this whole time of flight. No doubt. So all these concepts we have seen in last lecture. Okay. और ये भी हमने देखा था कि कौन वेरिएबल होता है और कौन कांस्टेंट होता है. Yes. Okay, so now let us see the next article in this chapter, that is about yes, the equation for the, let me say, we have to derive the equation for trajectory of the projectile. This is actually very important question, and it is going to be for 4 marks. तो ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपको 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, याद रखिए से. ओके, सो लेट अस सी. तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो एक प्रोजेक्टाइल कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट अस कंसिडर प्रोजेक्टाइल. उसके लिए हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसिडर करना पड़ेगा. सपोज ये वाई एक्सिस और समझो ये जो है वो एक्स एक्सिस है, एंड सपोज projectile is actually fired from a point that is origin. Okay, तो origin से समझो हमने ये projectile को fire किया, तो देखो क्या होगा. And suppose that the projectile is fired with the velocity u. Okay, so this is the velocity u with which this projectile is fired. Okay, it is denoted by u. Yes, and it is fired at an angle theta with the horizontal. Suppose, तो ये जो एंगल है तो ये एंगल को हम दे देंगे थीटा, एंड u is the velocity of projection. Okay, after it is projected it will move along the path like this. तो इस टाइप का जो पाथ है वो फॉलो करेगा, and it will reach at the maximum height at some instant, and then again return to the same level as it was fired with. And this point where the projectile hits the ground once again is actually called as the range of the projectile. The distance of this point from the origin is called as the range of projectile. Okay, तो ये हो गया point, इसको हम नाम दे देंगे A. Okay, this point is going to be A. Yes. Okay, अब इसमें देखो, the projectile motion can be observed to be the effective motion of the motion in 2 dimensions. तो ये motion, every motion in 2 dimensions is actually the combination of motion in 1 dimension along each axis. मतलब क्या, देखो अब ये projectile इस तरफ जा रहा है, no doubt, लेकिन we can consider this projectile to be equivalent to the motion of 2 different bodies, one of which is moving along x axis like this, and the other one is moving along y axis. देखो ठीक से, the body which is moving in x direction will continue to move with this constant speed here in the horizontal direction,
तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मूव होने वाला बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता रहेगा, और जो मोशन ऑफ द बॉडी इन वर्टिकल डायरेक्शन और मोशन ऑफ द बॉडी इन वाई डायरेक्शन will be like this. It will move further, move first in the upward direction and will reach at the highest point and then just return back to the lowest point in this way. So this type of motion will be there for this vertical body. And अगर जो horizontal motion जो उसका है वो constant speed के साथ एक ही straight line में x axis के along रहेगा जब तक वो यहाँ पे a point पे नहीं पहुंच जाता, बिल्कुल. So this is actually the basic strategy we have to apply here. क्योंकि देखो every vector can be resolved in two components, one of which is along x-axis and the other one is going to be along y-axis, right? So every vector, तो वो फिर gravity हो मतलब acceleration हो या velocity हो या displacement हो, इन सबको हम दो components के अंदर resolve कर सकते हैं, बांट सकते हैं. जैसे हमने कल भी किया था, तो ये जो u bar है, तो this u can be resolved into two components so as to say that one of which will be x component of u which will be actually, तो देखो यहाँ पे u के जो दो components है तो वो इस तरह से हम दिखाएंगे, ये उसका x component हो गया, okay, which will be denoted by u cos theta, and दूसरा जो है वो ये उसका y component हो गया है, देखो this is going to be actually u sin theta, right? Okay, so these are the two components of u only. तो इस u के दो components हम लोग को मिल गए, ठीक है, u cos theta और u sin theta. चलो ठीक है, अभी देखो, ओके, तो यहाँ पे ये जो है जिसको हम बोलेंगे ux भी बोल सकते हैं, देखो ux is going to be the component of this u along x-axis, that's why it's called as ux, right? And the component of u along y-axis will be actually called as uy, right? Okay, so and u is different, okay, तो u जो है वो तो ये है, yes. In the same way we can also discuss about the final velocity of the particle. Okay, final velocity मतलब क्या, देखो ठीक से, final velocity is going to be the velocity of the particle at some instant of time. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो उसका वेलोसिटी बनता है तो उसको हम फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हैं, बिल्कुल. तो सपोज कोई भी एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट इमेजिन कर लो, सपोज ये P पॉइंट है यहाँ पे, देखो, तो इस P पॉइंट पे जो उसका वेलोसिटी होगा उसको हम फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हैं, यस. तो ये पॉइंट P है सपोज, और यहाँ पे जो उसका वेलोसिटी बनता है it will be along the tangent at that point actually, yes. So this will be the velocity at point P here, which will be directed along the tangent to this point here. Okay, the strange thing to observe here is that ये v जो है, इस v का अगर x component देखते हो कि नहीं, x component, so if we resolve this v in two components once again, तो यहाँ पे आ जाएगा एक component उसका horizontal direction में जो कि vx कहलाएगा. Okay, इसको हम horizontal direction में जो उसका component बनता है तो उसको हम vx बोल सकते हैं, no doubt. और जो दूसरा उसका कंपोनेंट बनेगा तो उसको हम vy बोल सकते हैं आराम से. So this is actually going to be vy. Okay, so अब देखो ये हमारा हो गया vx, yes, and this is going to be actually vy. Okay, so here this vx and vy are going to be the two components of this v here, and ux and uy are going to be the two components of u here. ओके, तो ये इस तरह से कंपोनेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं. और जब ये पार्टिकल जब प्रोजेक्टाइल जो है वो जब पॉइंट P पे आ जाएगा तो उस P के भी तो कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे कि नहीं, जरूर. तो उस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है तो उसको हम बोल देंगे x and y. ओके, so these are the coordinates of this point P which can be actually obtained by drawing the perpendicular from this point P on x-axis and y-axis. Okay, so let us draw the perpendicular from point P on x-axis here. तो ये जो डिस्टेंस हमको मिल गया, ये जहाँ पे भी x-axis को जाके मिलेगा तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, it will be called as this x coordinate of this point P which is going to be x only. Yes, तो चलो ठीक है, ये जो है ये बन गया हमारा x.
this distance actually will be called as this x. Okay, and similarly the y this distance along y axis, तो ये जो यहाँ से अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया y axis पे, देखो ऐसे ये हो गया perpendicular drawn on y axis, then that distance will actually be called as y. तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है तो उसको हम y बोल सकते हैं, देखो ठीक से. So this distance actually will be called as y. Okay. Yes. So अभी देखो यहाँ पे we can get the three kinematical equations. Okay, three kinematical equations in horizontal motion also, and the three kinematical equations can be applied on vertical motion also separately. तो सेपरेटली हम यहाँ पे तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल, नो डाउट. तो लेट अस अप्लाई, ट्राई टू अप्लाई द काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑन हॉरिजॉन्टल मोशन, okay, along x axis. Yes, so if we apply the kinematic equation in horizontal motion, so we can write that for horizontal motion, or we can say the motion along x axis. ओके, तो सबसे पहली बात ये क्लियर करो कि हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर देयर इज नो एक्सेलरेशन, करेक्ट है, नो एक्सेलरेशन. व्हाई? बिकॉज व्हाई देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल मोशन? Because we know that the gravitational force acts in a vertically downward direction. देखो हमेशा इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा वो बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, है कि नहीं? The weight of the projectile will always act on it in the downward direction. Yes. So there is no force acting on it in the horizontal direction, right? And since there is no force acting on it in the horizontal direction, what we can say is, we can say that there is no acceleration in the horizontal direction. ये बात सबको समझ में आएगा ठीक से? Why the motion of projectile is horizontal? Motion of projectile has no acceleration in horizontal motion. अगर उसमें कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी फटाफट. देखो यहाँ पे for the horizontal motion there is no acceleration. Yes. One more thing we can say is, in case of horizontal motion, since there is no acceleration, we can say that horizontal velocity is going to be constant. ये जो इसका horizontal velocity होता है वो constant रहेगा. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने अभी देखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं ना. तो जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो सीधी बात है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा ही, बिल्कुल. एंड हेंस वी कैन कॉल दैट द हॉरिजॉन्टल मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन. बोल सकते हैं ऐसा, बिल्कुल. ऑलरेडी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में या लास्ट के कुछ लेक्चर्स के अंदर कि व्हेनेवर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, दैट मोशन इज ऑलवेज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म मोशन, बराबर. And here we can say that the formula or relationship between the displacement, velocity and time will be simply displacement is equal to the velocity of the body multiplied by time. करेक्ट है? ये सिंपल सा रिलेशनशिप हमको मिल जाएगा यहाँ पे in case of the horizontal motion. समझा क्यों? So here we are going to get this these 4 points. These are the characteristics of this horizontal motion here. Okay.
see here what happens for horizontal motion, and now we'll discuss about what happens for vertical motion. Yes. Yes, what happens for vertical motion? Let us see. सबसे पहली बात यह है कि वर्टिकल मोशन के अंदर जो होता है ना कि उसका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है. It is a uniformly accelerated motion because the acceleration due to gravity acts on it. ओके तो वर्टिकल मोशन के अंदर क्या होता है ना कि मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो काम कर रहा है, इसलिए हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि इट इज द सिंपली द इट इज द यूनिफॉर्म मोशन. बिल्कुल नहीं. यू हैव टू से दैट इट इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. रिमेंबर. ओके वर्टिकल मोशन जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलरेडी एक्टिंग ऑन इट in the vertically downward direction. Okay, what else? और क्या चीज हम देख सकते हैं यहाँ पे? तो ये कि इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है तो चलो ठीक है, हॉरिजॉन्टल में हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है, बराबर. यहाँ पे हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. Okay, but in this case, if we see carefully, then the vertical velocity here, in case of the vertical motion, doesn't remain constant. Remember. Okay, so ये बात याद रखो ठीक से. The vertical velocity is not constant actually. Yes, and what else is? We can say in case of the vertical motion, since there is a constant acceleration is already there. So what can we say? It is the uniformly accelerated motion. समझा ठीक से? और इसी की वजह से हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो वर्टिकल मोशन के अंदर क्या करना पड़ेगा, काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज करने पड़ेंगे. समझा ठीक से? काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो है ठीक है यूज करने पड़ेंगे. बिल्कुल. जो वन डायमेंशनल वाले जो काइनेमेटिक इक्वेशंस होते हैं कि नहीं, वो हमको यूज करने पड़ेंगे इधर वर्टिकल मोशन के अंदर. बिल्कुल. तो ये बात याद रखो. These are the 4 points to be kept in mind in case of vertical motion, and these are the 4 points which are to be kept in mind for horizontal motion. Okay, चलो ठीक है. Now let us try to use all these points here. Okay, so since what happens in case of horizontal motion, so let us discuss horizontal motion and vertical motion separately. Sorry. Yes, vertical velocity doesn't remain constant. Okay, but horizontal velocity remains constant. And how much is the horizontal velocity here? It is ux, as we can see here. Okay, now let us try to apply all these concepts here. तो अभी देखो यहाँ पे ये सब concept अगर हम apply करने के लिए अगर try करते हैं तो हमको पता चलेगा. तो ठीक है, vertical motion का जो है वो analysis थोड़ा सा हम बाजू में रखेंगे, चलेगा? Let us focus on horizontal motion first. Okay, so in this case the displacement, velocity and time, इन तीनों के बीच में क्या relationship होता है ये हमने अभी भी देखा कि displacement is equal to velocity into time. Okay, so what can we say or what can we expect here is this horizontal distance traveled by the body, which is x here, must be actually equal to ux, that is the horizontal velocity of the body ux multiplied by time. Suppose the time t is required for the body to move from this point to this point here. तो O से लेके P तक अगर बॉडी को समझो T इतना टाइम लगा होगा तो उसमें हम देखेंगे कि O से लेके P तक बॉडी को T इतना टाइम लगा, तो इस T टाइम के अंदर बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हियर विल बी x
which must be actually equal to this ux multiplied by time t. Okay, so ये एक simple सा equation हमको मिल जाता है horizontal motion के अंदर, that x is actually going to be equal to ux into t. ये समझा क्या ठीक से? X is equal to ux into t. Just let us call this as equation number 1. Okay, which will be helpful in the next steps. Okay, but in case of horizontal motion, since horizontal velocity is constant, what can we say here is, अभी देखो यहाँ पे horizontal motion जो है उसके अंदर final velocity कितना है? What is the velocity of the particle at point P here? It is vx, right? And what is the initial horizontal velocity we have seen it here? It is ux, right? And since we have said that the horizontal velocity actually remains constant, so what does it mean is this vx is going to be exactly same as this ux here. Okay, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है. This happens in case of horizontal motion, that vx actually is same as ux. समझा ठीक से? क्यों? क्योंकि horizontal velocity remains constant. तो constant मतलब initial and final equal. Okay, so this is the important condition which can be recorded as equation number 2 here in case of this horizontal motion. Yes. Okay, now let us talk about this vertical motion in detail. Okay, तो vertical motion के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या मिल रहा है हमको. तो देखो सबसे पहले ये 4 पॉइंट्स जो है वो तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, नो डाउट, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है वहां पे, वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और काइनेमेटिक इक्वेशंस कैन बी यूज्ड हियर. ओके, सो इफ वी यूज द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन इन द वर्टिकल मोशन हियर, तो देखो वर्टिकल मोशन को फोकस करो अभी, जस्ट फॉरगेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल मोशन. ओके, तो वर्टिकल मोशन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितना है पार्टिकल का? तो वो है uy, ये देखो. एंड व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? इट इज vy, करेक्ट है. And what is the time required for the particle to move from this point to this point here is the same, that is t, no doubt. But at the same time vertical displacement कितना है particle का? तो ये देखो y, this is the vertical displacement of the particle, मतलब displacement in vertical direction we can say. Okay, and what is the acceleration in this case in a vertical direction? It is universally constant. Remember, this acceleration in vertical direction is already always it is constant, and it is fixed, and it is going to be g here, or you can say minus g here. Okay, minus g. So this minus g is going to be the acceleration due to gravity, which is going to be constant at every point. Okay, so let us assume this minus g as the acceleration due to gravity, which is uniform at all the points of this projectile motion. Okay, ये पूरे projectile motion के अंदर ये जो acceleration है ये कांस्टेंट है, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इसीलिए वो माइनस जी कहलाता है. माइनस नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वो डाउनवर्ड है इसलिए. चलो ठीक है, अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि what will happen if we apply the first kinematic equation on this vertical motion. What is the first kinematic equation we already have? We have it as v is equal to u plus at, करेक्ट है. ये हमारा फर्स्ट kinematic equation बनता है. Okay, but if we use it for vertical motion, what will happen here is v will actually be replaced by vy. Okay, and u will be replaced by this uy, and t तो चलो टाइम तो वही रहेगा, but a must be replaced by what? This minus g. समझा क्या ठीक से? Because we are focusing on vertical motion here, right? So that's why vertical motion के अंदर यहाँ पे equation क्या बनेगा हमारा? देखो ठीक से, it will be vy is equal to uy, and a के बदले क्या आने वाला है? minus g, right? So here it will be minus of g into t. That's it. And this is actually called as the first kinematic equation in vertical motion. Remember? Yes. चलो ठीक है. So this is going to be the first kinematic equation in vertical motion. Okay. Try to apply the second one. What does this second kinematic equation tells us? It tells simply that s is equal to ut plus half at square, correct है? This is our first second kinematic equation. Okay, but if you want to apply it for vertical motion, then how will it get modified? तो उसमें s के बदले क्या आएगा बताओ? What is the displacement of body in vertical direction? See it here, it is y, correct है?
So here s has to be replaced by y, no doubt. तो यहाँ पे आ गया y. ठीक है, अभी uy के बदले क्या आने वाला है बताओ? What is the initial velocity of the body? It is uy, correct है? It is the initial vertical velocity. So we can replace it by that and get this as uy. Okay, and into t as it is. Yes, and what we are left with is, अभी यहाँ पे देखो next step में क्या आने वाला है हमको, plus half a t square. But what is a here? तो a यहाँ पे क्या होने वाला है, इस g माइनस g रहने वाला है, करेक्ट है? तो इसलिए ये a के बदले अगर हमने माइनस g डाल दिया तो वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और उसकी वजह से यहाँ पे हम लिख सकेंगे माइनस हाफ g t square, करेक्ट है? So this is actually the second kinematic equation which is customized for vertical motion. Okay, give it equation number 2. Okay, yes, or just let us call them as equation number 3 and 4 will be better, because one and two is already covered ना, यहाँ पे हमने 1 और 2 तो बोल के रखा है ऑलरेडी इसको, तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3 और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4. Okay, yes, now let us try to apply the third kinematic equation in vertical motion. Okay, so if you apply the third kinematic equation in vertical motion, then what we will get here is, अच्छा उससे पहले हम ऐसा करेंगे कि ये जो है ये फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा उठा के इस तरफ रख देंगे, चलेगा? And this is actually the second kinematic equation which is applied on vertical motion. Yes, so we can put it here. Okay, and now let us try to apply the third kinematic equation in vertical motion. Okay, what is the third kinematic equation? It is simply v square is equal to u square plus 2as, correct है? तो ये हमारा third kinematical equation है. But okay, but if we try to apply it for vertical motion, तो vertical motion के लिए अगर customize करेंगे इसको, तो v के बदले क्या आ जाएगा? vy आ जाएगा, u के बदले uy आ जाएगा, और 2a के बदले माइनस g आ जाएगा. yes, और at the same time if we see s के बदले क्या आने वाला है? ये y आने वाला है. समझा ठीक से? So all these are the values to be replaced here in this equation, so as to get customized it form for vertical motion. Okay, so v के बदले आ जाएगा vy और उसका square kept as it is, which is going to be equal to uy उसका भी square as it is, and a is going to be replaced by this minus g, right? So because of that minus sign here we will get minus b in between, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे 2 into g into y, where y is going to be actually the vertical displacement of the body. Okay, so this is actually going to be the fifth equation we can see here. Okay, अच्छा अभी मुझे पूरा एक जो ये पूरा स्क्रीन जो है वो पूरे स्क्रीन के अंदर तुमको अगर किधर भी अगर डाउट है तो जरूर पूछो, कौन सा इक्वेशन कैसे आया वो पूछ लो फटाफट, क्योंकि इसके ऊपर ही हमको आगे डेरिवेशन करना है. ये तीनों इक्वेशंस तुमको खुद को बनाने आने चाहिए. ओके, देखो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर हमने क्या किया, सिंपली डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये यूज किया. जबकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये x को ही हमने डिस्प्लेसमेंट बोला था, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो x बन गया, राइट? और वेलोसिटी कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ux है, और टाइम तो चलो t ही होगा, नो डाउट. अभी और ये भी हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, राइट? So since the horizontal velocity remains constant, that means the horizontal component of this final velocity here is actually going to be same as the horizontal component of initial velocity here, which means that Vx is actually going to be equal to Ux. So this is the
second equation we have got it here. Yes. Okay. And also in vertical motion, अभी देखो वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है बता समझा ठीक से. What is the basic difference between these two is that in case of horizontal motion there is no acceleration. Yes. Why? Because see अगर कोई भी चीज जो है तो वो अगर सपोज हम ये मान लो हमारा x एक्सिस है और ये सपोज y एक्सिस है और अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है तो वो हम अगर इस तरफ थ्रो करते हैं इस तरफ अगर थ्रो करते हैं तो क्या होगा. तो जैसे हमने हाथ से अगर उसको पकड़ के रखा है जब तक हाथ से पकड़ के रखा है तब तक हम उसको एक्सेलरेशन देंगे बिल्कुल क्योंकि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना. यस. ओके. सो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है वो अगर हमने ऊपर थ्रो किया तो जैसे हम ऊपर थ्रो करेंगे तो जब तक हमारे हाथ के कांटेक्ट में है तो तब तक हम उसको हाथ से ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो इसीलिए हाथ से जो प्रोड्यूस किया हुआ जो एक्सेलरेशन है वो तो इसी डायरेक्शन में होगा नो डाउट. लेकिन कब तक? जब तक वो हमारे हाथ के कांटेक्ट में है तब तक. राइट. यस. उसके बाद फिर जैसे हमारे हाथ से वो छूट गया उसके बाद क्या होगा. सपोज वो यहाँ पे है अभी हमारे हाथ के कांटेक्ट में तो है ही नहीं. अभी उसके ऊपर एक ही फोर्स काम कर रहा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि उसके वेट के बराबर है. एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी will actually be equal to the force divided by mass. करेक्ट है. ये हमारा फॉर्मूला है. acceleration is always equal to force upon mass, right? So if we try to find this acceleration here then we can get simplified it as अभी देखो force कितना है यहाँ पे. It is same as the weight of the body which is mg and that is to be divided by the mass which is m. So if we divide it by m then m will get cancelled and what we are left with is g here. So here we are going to get this acceleration of the body which is g and obviously we know that the acceleration of the body is going to be in the downward direction, right? At every point the acceleration of the body is going to be in the downward direction and that's why we can say that there is no acceleration in the horizontal direction. horizontal direction में कोई force ही नहीं है तो acceleration कहाँ से आएगा. देखो acceleration equal to क्या होता है. It is actually equal to the force upon mass. करेक्ट है. अगर अभी देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई खींचने वाला है क्या बॉडी को. बिल्कुल नहीं. कौन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचेगा उसको. कोई नहीं. एक बार उसको अगर हमने छोड़ दिया तो उसके बाद हॉरिजॉन्टल मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं उसके ऊपर काम करने वाला. अभी जब फोर्स ही नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स इज जीरो एंड दैट जीरो if it is divided by this mass m then the ratio of this 0 to m will be 0 only and that's why we can say that in the horizontal motion there is no acceleration at all. Remember. So याद रखो ठीक से. तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो प्योरली वर्टिकल है. कोई भी एक वेक्टर जो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हो तो उसको हम अगर रिजॉल्व करना चाहते हैं सपोज ये वेक्टर है ये इसको हमको रिजॉल्व करना है. ठीक है. एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. समझो ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है and just suppose we want to resolve this vector into two components one of which must be horizontal and the other one must be vertical. Okay. So how can we do that. So उसके लिए सबसे पहले हम इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे. तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर रिजॉल्व करेंगे तो वो खुद वेक्टर ही मिल जाएगा बिल्कुल. ये देखो ये हो गया उसका कंपोनेंट along vertical direction. But if we resolve it along horizontal direction then we will not go further. किधर भी नहीं जा सकते हम. यहाँ पे ही रुकना पड़ेगा हमको. That means we can say that the horizontal component of this body is actually going to be zero. बिल्कुल. तो यहाँ पे जो उसका horizontal component जो है तो वो zero बनता है. इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि G has vertical component only. इसलिए इसको minus of J bar बोल सकते हैं. Minus of G into J bar. बिकॉज इसको हम अगर हमको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है एक्सेलरेशन को ए बार को तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा. 0 I बार माइनस जी इंटू जे बार ऐसा लिखना पड़ेगा. अभी सीधी बात है देखो एक्सेलरेशन ए बार जो होता है वो कैसे होता है ax इंटू आई बार प्लस ay इंटू जे बार ऐसे होता है कि नहीं.
तो इसमें जो आई बार का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ax का जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा आपको, 0। और अगर इसको कंपेयर किया, ये इन दोनों को अगर कंपेयर किया तो हमको ay का वैल्यू क्या मिलता है, तो वो मिलता है -g, करेक्ट है। तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो हमको इस तरह से मिलते हैं, एंड हेंस वी कैन से दैट द एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी 0 in the horizontal direction, and that's why the velocity of the body will remain constant in horizontal direction. Yes, any doubt? Yes, Prashant. If an object moves upwards, then the gravity will be against the object, and that's why it is -g. यही है ना तुम्हारा डाउट? ओके, तो यस, तो बेसिकली यही सही है कि कोई भी बॉडी जब अपवर्ड मोशन करता है तो उस समय उसका जो एक्सेलरेशन है वो उसके मोशन के अगेंस्ट होता है, वेलोसिटी के अगेंस्ट होता है, और इसीलिए हम उसको वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो अभी देखो ये तीनों इक्वेशंस हमको मिल गए। दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट इक्वेशन in vertical direction. This is called as the second kinematic equation in vertical direction, and this will be called to be the third kinematic equation in the vertical direction. Okay, and this is basic equation in horizontal direction, which is to be remembered. Okay, तो ये चार equations जो है, तो इन चारों ही equations के ऊपर पूरा चैप्टर, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पूरा कंसेप्ट है वो बेस्ड है, याद रखो इसे। तो इसलिए मैं तुम्हारे से एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल के लेक्चर तक मुझे ये चारों जो इक्वेशंस तुम्हारे पास है तो वो लर्न होने चाहिए। बिल्कुल लर्न माना लर्न। अगर तुमको पूछा व्हाट इज द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, you should be able to tell it here easily. If you are asked to find out the second kinematic equation in the vertical direction, so you should be able to tell that orally. डायरेक्ट डायरेक्ट तुमको बताने आना चाहिए, ये निकालने नहीं पड़ना चाहिए कि फिर पहले ये सोचो फिर उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करो फिर उसके बाद तुमको ये मिलेगा, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट लर्न। ठीक है, तो ये याद रखो ठीक से। So these are the four kinematic equations. If you remember these four kinematic equations, then all the derivations in this chapter will become very much easy. Okay, and even कोई भी न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल कोई भी न्यूमेरिकल तुम ये चार काइनेमेटिक इक्वेशंस जो है, ये 1 2 3 और ये चौथा, समझा ठीक से। तो ये अभी चार तो ऐसे नहीं है, तीन ही है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल का एक जो है तो वो मिला के मैं चार बोल रहा हूँ। तो ये चार काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करके पूरे चैप्टर के अंदर का कोई भी डेरिवेशन तुम आराम से कर सकते हो, या कितना भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल जो है तो वो तू तो इस चार इक्वेशंस के आधार पे आराम से कर सकते हो। तो उसके लिए ये चारों इक्वेशंस जो है वो तुमको लर्न होना जरूरी है। ओके, तो कल के लेक्चर तक ये चारों इक्वेशंस जो है वो लर्न करके रखो। सो विल डिराइव द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल जो हमारा आज का एम था तो वो हम कल करेंगे। ओके, कल के लेक्चर में वो देखेंगे किस तरह से ट्राजेक्टरी का इक्वेशन निकाला जाता है। ओके ओके, सो this is all about today's lecture. Yes, and now we will stop here. Yes, thank you all of you.